Muskan's Good Life. This is Muskan Saini. I hope everyone is doing great. So मैं आई हूँ जयपुर में और अपनी फ्रेंड के साथ कनिका. So we are at a unit trip. So हमने एक पूरा दिन लगा के ट्रैवल किया. So अभी हम बहुत exhausted है. But हमारा ब्रेकफास्ट है अभी. So this is our room. So please ignore the mess we created because हम जैसे ही रूम में आए हम सीधा हो गए. So now it's a breakfast time. So let's go. घर में हम 8 बजे से पहले उठे ना. यहाँ पे हम 8 बजे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. So it's 8 PM. Sorry 8 AM. हम उसको पूरा वसूल करेंगे. So it's 8 AM and हम जा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने. Yay! So पहले तो हम रिव्यू करेंगे क्या क्या बना. ठीक है. So let's see what's there. It's पूरी भाजी और क्या क्या है यहाँ पे. सांबर, मसाला ओट्स एंड हॉट मिल्क एंड फ्रूट्स समथिंग ओट्स वगैरह. सो या एंड उधर भी है. That's a puri with bhaji and I know what this is. Day 1 and we are ready. I'm going to show you the full outfit. So तब तक के लिए बता दें कि हम अब कहाँ जा रहे हैं. हम जा रहे हैं हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस एंड जो भी प्लेसेस है वहाँ पे हम जाएंगे. आर रेडी एंड अब हम जा रहे हैं नीचे. हम देखेंगे, घूमेंगे बिकॉज इसके पास एक पार्क है. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर. आई चेंज माई आउटफिट बिकॉज जो पिछला आउटफिट था वो नीचे फ्लोर पे बहुत लग रहा था. सो दिस इज़ माई न्यू आउटफिट. ये इन मोमेंट पे ये आउटफिट चेंज किया इनटू सिटी पैलेस म्यूजियम एंड हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. आई एम गोना शो यू गाइस. बिकॉज हमने आज गाइड नहीं लिया. सो बट वी गोना फिगर इट आउट. ओके. Go to explore cafe and हम फिर अच्छा फूड खाएंगे. सो या अभी हम हैं सिटी पैलेस के बीच में एक कैफ़े है. सो इसका रास्ता बहुत ही भूल-भुलैया बट ओके वी गोना गो इट. सो लेट्स सी कि ये कैफ़े कैसा होता है. वी आर हैविंग आवर कॉफ़ी एंड कॉफ़ी इज़ 100% approved from me because this is amazing. Yeah. Explored that much but we explored the cafe at the top but it was so cool. The coffee was so cool and now let's go to Hawa Mahal and उसके बाद हम बापू बाज़ार जाके थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे. So yeah, that's the itinerary for today. Wow, that's so cool. Okay, I know that. Right now okay, this is the park. Exploring the Bapu Bazaar and अभी हम अंदर आए हैं कि मतलब ऐसे लग रहा है कि इंस्टेंटली कि सब चीज़ ले ले. Let us do some touristy thing कर रहे हैं. We are clicking pictures at हवा महल. अब मैं और कनिका एक प्लेस में आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं. सो लेट्स सी हमें क्या पसंद आता है. तो पहले तो मैं देख रही हूँ कि अपने के लिए कोई शॉर्ट कुर्ती और या फिर कोई फ्रॉक. We have done lot of shopping and अभी हम वापस आ रहे हैं होटल में. मेरी आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है. I don't know why. My throat is literally bleeding and I don't know why my voice is so much changed. It's our dinner time and dinner बहुत ही cool place में. I'm gonna show you guys. So I'm very excited for this. Let's go. You guys, this place is so amazing. यहाँ पे एक पार्टी हो रही है. This is anniversary party. तो everyone is gathered over here. तो हम भी इनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं. जिसकी भी एनिवर्सरी है उसको हैप्पी एनिवर्सरी. So guys, अब हम यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं. ट्रेन आएगी हमारे पास. आने वाली है ट्रेन. मुझे आवाज़ आ रही है कि ट्रेन आ रही है. आगे आगे सब ट्रेन में जाएंगे. We all are ready. तो ट्रेन आ रही है. मुझे लगता है ट्रेन आ रही है. ट्रेन आ गई. So guys, बैठे हुए हैं. दिल्ली पंजाब से आए हुए. Stuff we get from the Bapu Bazaar. अभी तक हमने अपने पॉलिथीन खोले ही नहीं है. सो बहुत ही सारी beautiful kurtis and sarees. We have bangles.
Guys, this is the end of the vlog. So day 1 is covered. So tomorrow we are going to Pushkar and it's day 2 in Jaipur and हम जा रहे हैं पुष्कर and आपको पुष्कर जाके मिलते हैं. Bye. It's a tea break and we finally reached Pushkar. Road trip was seriously amazing. पूरा journey इतना scenic था. Just checking into the super cute property and I'm already obsessed with the place. Everyone was pretty tired after the journey, so we quickly headed to our rooms to relax. But just let me quickly give you a room tour. This is our room. The room is really spacious and had just a cozy feel to it. My voiceover here was literally gone because of my throat pain, but I'm gonna do a voiceover for you guys what I'm explaining over here. So after resting for a while, we start planning our evening. We were thinking to visit the Brahma temple and going for a camel ride. We all were really excited to explore Pushkar, so the plan was to visit Brahma temple and maybe try a camel ride too. And then we reached to Brahma temple, but then we got to know this is the wrong direction and then we headed straight to the Brahma temple. They say Pushkar is one of the most sacred place in India, and what makes it even more special, this is the Brahma temple. It is actually one of the very few temples in the world dedicated to Lord Brahma, the creator of the universe. It is believed that Lord Brahma performed a secret ritual here, but due to twist in his story involving his wife, goddess Saraswati, a curse was placed that he would not be widely worshipped anywhere else. That's why this temple in Pushkar is so rare and special. People from all over the world come here not for just blessing but also to experience the peaceful and spiritual vibe of the place. Guys, now we are having this. I don't know what. Malpua. Yeah. After the beautiful dance performance, we head straight to the dinner. The dinner was so tasty. Everyone was enjoying the dinner. So that's for all day 2 and I'll meet you tomorrow with a new fit and a new location. Until then, bye. Hi everyone, it's our last day in Pushkar and honestly this place has been amazing. We quickly got ready and of course everyone was busy clicking pictures and enjoying the beautiful vibe here. We are heading to our next location and we are checking out this beautiful property. Now we're heading to Pushkar Lake, one of the most beautiful and spiritual spot here. The vibe there is so calm and positive. Now at the moment I'm at the Pushkar Lakes. It looks honestly so beautiful and calming. I'm really loving the vibe here. The next location we are off to is Nagrat Fort. We are going to explore the Nagrat Fort too. After spending some peaceful time at the Pushkar Lake, we made our way towards the Nagrat Fort. Long ago, the hills between Pushkar and Ajmer were believed to be sacred, and this is where the Nag Pahar Fort stands today. People say that these hills acted like a natural boundary and quietly watching over the both cities. Over the time, the fort became a peaceful spot where the travelers would come, not just for the protection, but to experience the calm and the beauty around. Even today, when you stand here, it feels like the place is holding so many stories within it. Silent but powerful. It's not just a place, it's a feeling, calm, mysterious and unforgettable. अकबर की और वो अकबर के वजीर मुल्ला मदारी की ओके और वो 60 मन वाली जो है राव कमानी सेनिया जो राजस्थान की थी ना सेनिया परिवार उनका बनाया हुआ 60 मन का ठीक है. Look at the size of this cow. This एक बार में भी जाऊंगी मैं तो. ये है हमारा चाय शॉट. Chai shot. And that's a wrap up for the vlog. Pushkar and Jaipur, you were amazing. I hope you all loved this vlog. So don't forget to like, subscribe and share. Until then, bye.